Tag TV brings you daily news bulletin from India. Breaking news and views from India. You're watching South Asia Newsline and here are the top stories we are tracking for you on Monday, the 1st of September. PM Modi attends SCO summit in China, meets Xi Jinping and Putin. Students in PoJK protest against false cases and arrest of minors. And hundreds dead after magnitude 6 earthquake hits Afghanistan. And now for all the details. India's Prime Minister Narendra Modi at the SCO summit in China on Monday called the bloc a guiding light for multilateralism and urged unity against terrorism. He also stressed stronger regional connectivity and held key meetings with the presidents of China and Russia. We have a report. India's Prime Minister Narendra Modi said on Monday that the Shanghai Cooperation Organization can be a guiding light for multilateralism and inclusive world order as he attended the grouping's summit in China. India has always believed that stronger connectivity can open the gates for not just business but trust and development as well, Modi said in his address. The security-focused bloc, which began as a group of 6 Eurasian nations, has expanded to 10 permanent members and 16 dialogue and observer countries in recent years. SCO, multilateralism और inclusive world order का मार्गदर्शक बन सकता है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। Meanwhile, Russia's Putin and PM Modi praised relations between the two countries as they held talks on the sidelines of the 2-day SCO meeting. Putin addressed Modi as his dear friend and said relations were developing dynamically. Modi told Putin that he hopes Russia and Ukraine will move forward to end their war soon. The meeting also came against the backdrop of U.S. tariffs against India for buying Russian oil, adding to the geopolitical weight of the discussions. And over 1.5 million people have been affected as catastrophic floods have hit northeast Pakistan. Authorities say more than 850 people have died this monsoon. We have a report. Torrential rains and overflowing rivers have caused flooding in over 1,400 villages in Pakistan's Punjab province. People are displaced and forced to take shelter in makeshift camps. Punjab's Provincial Disaster Management Authority issued a warning that very high to exceptionally high flooding would continue in River Sutlej, Ravi and Chenab. जो भैंसें निकाली हैं वो रोड पे बांधी हैं वो रोड पे वो जो लोग हैं वो रोड पे बांधने नहीं दे रहे साइड पे भी बांधी हैं वो लोग कह रहे हैं यहाँ से निकालो और जो हमारा काफ़ी नुकसान हो गया डेरा भी तबाह हो गया और ये सारी फसलें तबाह हो गई हमारी इधर. The floodwaters have also entered residential areas of Lahore, inundating roads and damaging houses and other infrastructure. People protested in a local residential society in Lahore demanding compensation for their losses. Pakistan's east is home to half of the country's 240 million population and serves as the country's agricultural region with widespread damage to crops from the floods. जब आप जाएंगे अपने अपने घरों में तभी पता चलेगा ना क्या क्या नुकसान हुआ है और ये जो मुतासरीन को इन्होंने एक भड़क तो मार दी है लेकिन क्या ये सब लोगों के फर्नीचर पूरे करेंगे क्या ये फ्रिजें जो खराब हुई हैं ओवन खराब हुआ है और इनको जिन्होंने 20 मिनट पहले आके पुलिस वालों ने धक्के मार मार के निकाला है बेइज्जत करके निकाला है अपने अपने घरों से. Moving on, students in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir have intensified their protest, demanding the release of minors arrested under what they call bogus FIRs. They warn that if authorities continue to ignore their demands, the movement will escalate further.
Students in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are protesting against baseless furs and arrests, including of minors in Rawalakot, demanding their release and an end to false charges. The student organizations have warned of stronger actions if their demands for justice and freedom are ignored. हम यहाँ पर गुज़श्ता 2 दिनों से भूख हड़ताली कैंप मुजफ्फराबाद सेंट्रल क्लब के बाहर बैठे हुए हैं। बेसिक तौर पे 13 अगस्त को रवलाकोट के मुकाम पर एक इवेंट के दौरान जो है वो वहाँ पर कुछ सादम होता है और इंतजामिया ने मासूम तालिब इल्मों पर बेबुनियाद बोगस एफआईआर काटकर उन पर संगीन दिफात लगाकर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ जब पुरअमन तरीके से तालिब इल्मों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और इंतजामिया तक अपना पैगाम पहुंचाया कि ये बेबुनियाद मुकदमात इनको खत्म करके फिलफौर गिरफ्तार तालिब इल्मों को रिहा किया जाए, उनकी तालीम का ज़िया हो रहा है। और उन गिरफ्तार तलबा में से कुछ ऐसे तलबा थे जिनकी उम्र 13 से 14 साल थी और वो बेबुनियाद मुकदमात की हैसियत ये थी कि कुछ ऐसे तालिब इल्म जो इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए थे उनको भी उस एफआईआर के अंदर नामजद किया गया था। हम यहाँ पे भी भूख हड़ताल पे बैठे और ये मुतालबा करता है कि फिलफौर वो तमाम बोगस और जाली मुकदमात खत्म किए जाएं और फिलफौर अगर ये आर्टिकल 257 जो पाकिस्तान का आइन का हमें जो हक दे रहा है कि हम किसी तौर पर भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आते, हम एक अगर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक डिस्प्यूटेड स्टेट है तो पाकिस्तान का कोई भी कानून कोई भी असूल यहाँ पर लागू नहीं हो सकता। अगर आप इस तरह का जुल्म और जबर रखेंगे तो इसका रद्द अमल ये होगा कि हम आज तो पुरअमन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अपनी जानों का अज़ियत दे रहे हैं, अपनी जिंदगियों को मुश्किल में डाला है। कल को हम इन हुक्मरानों के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे और इनके लिए मुश्किल बनेंगे। As protests intensify, student groups and rights activists warn that unless authorities immediately withdraw false cases and release detained minors, the movement will only grow stronger, with the eyes of the world firmly upon it. And hundreds are feared dead following a 6.0 magnitude earthquake that struck Afghanistan. Media reports suggested that the death toll had reached more than 800 and over 2,500 were injured till the last reports came in. The quake hit the Jalalabad area around midnight and it was followed by 2 aftershocks of 5.2 and 4.7 magnitude respectively. Authorities said the death toll and the number of the injured was not final and communication was still ongoing amid rescue operations. Several villages in Nurgal district were buried under soil. The tremors caused casualties in Nangarhar and were felt in parts of Kabul and Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Afghanistan is prone to deadly earthquakes as the Indian and Eurasian tectonic plates meet near the Hindu Kush mountain range in Afghanistan. Nepal's new regulation introducing end to solo expeditions and hike in royalty fee of the 8,000-meter peaks has come into effect from Monday. Nepal amended Rule 6 of the mountaineering regulation on February 3 this year that bars climbers from solo expeditions on all the 8,000-meter peaks. The amendments were published in the Nepal government's official publication, the Nepal Gazette. The new provision stated that mountaineers climbing at an altitude more than 8,000 meters must be accompanied by at least one altitude worker or mountain guide. The recent amendment also includes hike in royalty fee to $15,000 per person for foreign climbers attempting to climb Mount Everest from the standard south route. The new provisions are now applicable to all mountains above 8,000 meters, including the highest peak, Mount Everest. And softball game is fast emerging as a new sporting sensation among girls in India's Jammu and Kashmir, offering them a fresh platform to showcase their athletic skills and competitive spirit. Once an unfamiliar game in the Kashmir Valley, softball is now steadily gaining popularity. Coaches and sports associations are encouraging this trend, providing proper training and facilities to ensure players can learn the game professionally. For many girls, softball is more than just a sport. It is becoming a medium of empowerment and confidence building. है कि सॉफ्टबॉल में इवन जो ओलंपिक्स होता है जैसे 2020 ओलंपिक्स हुआ उसमें खाली
गर्ल्स का ही रहा ओलंपिक में क्वालिफिकेशन। तो हमें इस बात की बेहद खुशी है कि सॉफ्ट बॉल में बनस्बत लड़कों के लड़कियां जुड़ रही हैं। The game, which requires agility, teamwork and quick decision making, is helping players sharpen both their physical and mental strength. The growing craze for softball reflects a positive shift in Kashmir's sports culture, where young women are breaking barriers and embracing new opportunities with enthusiasm. कि हमारी छोटी छोटी लड़कियां आ रही है, सीख रही है, तो हम अपने सीनियर प्लेयर से सीख रहे हैं, जिन्होंने खेला है तो उनके पास जा रहे हैं, हमारे कोचेस वगैरह, तो धीरे धीरे करके आ रहे हैं, पार्टिसिपेशन इसमें आ रही है धीरे धीरे करके। तो अभी यहाँ पे खेला जा रहा है, तो ये हमारा यहाँ कश्मीर में हो रहा है। अब यहाँ पे नेशनल लेवल का इवेंट हो रहा है कश्मीर में हमारे। That's all in tonight's edition. We will see you same time tomorrow. Good night. Tag TV brings you daily news bulletin from India. Breaking news and views from India.